Hi guys, my name is Muhammad Ahmed. Today we are going to discuss pharmacology of respiratory system. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, सीओपीडी, एलर्जिक रिनाइटिस एंड कफ। एस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है रिस्पायरेटरी एयरवेज की विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय episodes of acute bronchoconstriction that causes cough, chest tightness, shortness of breath, wheeze and rapid respiration। एस्थमा में हम बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टीराइड्स, एंटी मस्करीनिक, phosphodiesterase inhibitors, leukotrienes inhibitors, mast cell stabilizers and monoclonal antibodies यूज कर सकते हैं। Beta 2 adrenergic agonists and inhaled corticosteroids are first line therapy for treatment of asthma. Now we will start from beta 2 adrenergic agonist। हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के स्मूथ मसल्स पे बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बीटा टू रिसेप्टर्स ऑफ स्मूथ मसल्स पे एक्ट करती है, मिमिक द एक्शन ऑफ epinephrine and dilates the smooth muscles of bronchi and lead to bronchodilation. Short acting beta 2 adrenergic agonist is called SABA. They include albuterol, perbuterol, terbutaline, levalbuterol. The most common SABA that are used for treatment of asthma are albuterol and levalbuterol. Their onset of action is 5 to 30 minutes. Their duration of action is 4 to 6 hours. They are used for quick relief of asthma. Long-acting beta-2 adrenergic agonists are called LABA. They include salmeterol, formoterol, and zinafoate. Their onset of action varies from drug to drug. For example, salmeterol have 30-minute onset of action, formoterol have 5-minute onset of action, and their duration of action is 12 hours. They are not used for quick relief of asthma. They are used for long-term treatment of asthma. Beta 2 adrenergic agonists are given in the form of inhaler. That's why they have very low side effect. The side effects of beta 2 adrenergic agonists include tachycardia, hyperglycemia, hypokalemia and hypermagnesemia. हाइपोकैलीमिया इस वजह से होता है सेल के सरफेस पे पोटाशियम चैनल मौजूद होते हैं। बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट स्पेसिफिकली अल्ब्यूट्रोल शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पोटाशियम चैनल को स्टिमुलेट करता है। पोटाशियम चैनल पोटाशियम की अपटेक को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सीरम में पोटाशियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइपोकैलीमिया कहते हैं। यही वजह है कि अल्ब्यूट्रोल को स्पेसिफिकली हम हाइपरकैलेमिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट कर देता पोटाशियम चैनल को। पोटाशियम चैनल सीरम से पोटाशियम के अपटेक को इंक्रीज कर देता है। हाइपरमैग्नीसीमिया इस वजह से होता है कि बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं और यूरिन से मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सीरम में मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइपरमैग्नीसीमिया कहते हैं। Second type of drug that can be used in asthma is inhaled corticosteroid. Inhaled corticosteroid are actually suppress the inflammation. How they suppress the inflammation? In one of the previous videos we discussed that steroids suppress the inflammation by decreasing the circulating lymphocyte, by stabilizing the mast cell and basophil, by decreasing the ability of macrophages and neutrophils to respond antigen, and by inhibit the phospholipase A2। इन चार तरीकों से कोर्टिकोस्टीराइड्स इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं। वो कौन कौन से स्टीराइड्स हैं जो नेज़ल फॉर्म में अवेलेबल हैं और वो इनहेलर फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं? बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, ब्यूडेसोनाइड, मोमेटासोन एंड ट्राइएमसिनोलोन कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन। If we talk about side effects of inhaled corticosteroids, due to deposition of steroids in the oral and pharyngeal mucosa, it may lead to oropharyngeal candidiasis. There may be local side effects such as nose irritation, sore throat, nasal bleeding.
Due to improper inhalation technique, inhaled corticosteroid may lead to systemic absorption. Systemic absorption can lead to several side effects such as osteoporosis, iatrogenic Cushing syndrome, hyperglycemia, which eventually increase the risk of diabetes mellitus. It can cause hypokalemia and it may cause suppression of gonadotropin releasing hormone. Inhaled corticosteroids and beta-2 adrenergic agonists considered as first-line therapy. Now we will discuss antimuscarinic agents. On the smooth muscles of our bronchi and bronchioles, M3 muscarinic receptors are present. Antimuscarinic agents bind with muscarinic M3 receptors and inhibit the action of acetylcholine, which is releasing from vagus nerve, and inhibit the contraction of the smooth muscle of bronchi, which lead to bronchodilation. We can use ipratropium and tiotropium. Ipratropium is short acting antimuscarinic agent, tiotropium is long acting antimuscarinic agent. हम एंटीमस्कैनिक एजेंट तब यूज करते हैं जब बीटा टू एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट आर इनफेक्टिव और व्हेन देयर आर एस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम. Side effects are rare because we give in the form of inhaler. That's why they have very rare side effect. Leukotrienes antagonists are those agents that inhibit the action of or they oppose the action of leukotrienes. They include xylotone, zafirlukast, and montelukast. Cell membrane consists of phospholipids. When there are some stimuli such as allergens, infections, inflammation, they stimulate the phospholipase A2 enzyme. Phospholipase A2 enzyme convert the membrane phospholipid into arachidonic acid. Arachidonic acid have two pathway. One of them is 5-lipoxygenase pathway. In this pathway, 5-lipoxygenase enzyme act on arachidonic acid and convert it into leukotriene A4. अब leukotriene A4 leukotriene B4 में भी कन्वर्ट हो सकता है, C4 में भी कन्वर्ट हो सकता है. leukotriene A4 B4 में कन्वर्ट होता है in the presence of leukotriene A4 hydrolase और leukotriene A4 कन्वर्ट होता है leukotriene C4 में in the presence of leukotriene C4 synthetase. Leukotriene C4 फर्दर कन्वर्ट हो सकता है leukotriene D4 में in the presence of gamma glutamate transferase and leukotriene D4 कन्वर्ट होता है E4 में in the presence of dipeptidase. अब हमने डिस्कस की थी तीन ड्रग xylotone, montelukast, zafirlukast. xylotone इनहिबिट कर देती है 5-lipoxygenase एंजाइम के एक्शन को. मोन्टेलुकास्ट जाफिरलुकास्ट उन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाती है जिन रिसेप्टर पे लिकोट्राइन C4 ने D4 ने E4 ने आके एक्ट करना होता है. अब लिकोट्राइन B4 का क्या फंक्शन है और लिकोट्राइन C4 D4 E4 का क्या फंक्शन है. लिकोट्राइन B4 इज कीमोटैक्टिक एजेंट मींस ये न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करता है. Leukotriene C4, D4, E4 are bronchoconstrictor. They act on cysteine leukotriene receptor, causes smooth muscle contraction, increase the permeability of blood vessel and increase the mucus production in the lumen of bronchi, which eventually lead to vasoconstriction. These drugs are metabolized by the liver. Xylotone excreted by urine. Zafirlukast and montelukast are excreted via bile. If we talk about its absorption, food impairs the absorption of zafirlukast. These drugs are used in the form of tablet. They are not used in the form of inhaler. If we talk about their side effect, because they are metabolized by the liver, so long time use can increase the risk of liver damage and can increase the liver enzyme. अगर अपर नॉर्मल लिमिट से 3 से 5 टाइम लिवर इंजाइम इंक्रीज हो जाए सीरम में तो हम इस ड्रग थेरेपी को इनहिबिट कर देते हैं. देयर में बी हेडेक, डिस्पेप्सिया एंड एसिनोफिलिक वास्कुलाइटिस. If we talk about phosphodiesterase inhibitor, theophylline is phosphodiesterase inhibitor.
Theophylline inhibit the phosphodiesterase 3 and 4 enzyme. Normally, phosphodiesterase enzyme break down the cyclic adenosine monophosphate. When theophylline inhibits the phosphodiesterase 3 and 4 enzyme, it is unable to break down the cyclic adenosine monophosphate. Intracellular cyclic adenosine monophosphate level increases, which causes relaxation of the bronchial smooth muscle and decrease the production of mucous membrane, which lead to bronchodilation. We are not using this agent nowadays because it have very narrow therapeutic window and have very serious life threatening side effects including seizures and arrhythmia. The therapeutic level of this drug in serum is 10 to 15 microgram per ml. We will regularly monitor the therapeutic level of this agent in the serum. If the level of this drug in the serum increases more than 20 microgram per ml, we will inhibit the drug because at this level it can cause life-threatening side effects such as seizures and arrhythmia. It is metabolized by the liver cytochrome 3A4 and cytochrome 1A2 isoenzyme. Monoclonal antibodies derived from recombinant DNA technology. The monoclonal antibodies that can be used in asthma include omalizumab, meprolizumab, benralizumab, reslizumab. आपने फोकस किया होगा इन ड्रग्स के आखिर में लिजुमाब कॉमन है। कंसीडर कर लें ये मास्ट सेल है। मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होती है और बहुत सारे एलर्जिक मीडिएटर्स मौजूद होते हैं बट मोस्टली हिस्टामिन मौजूद होती है। अब इन सेल पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं IgE receptors. When allergens enter our respiratory system, it stimulates the IgE. IgE binds with Ig receptor that are present on mast cell and causes degranulation of mast cell and causes release of histamine and other allergic mediator. When we will give the omalizumab is selective IgE binders or inhibitors. It binds with selectively IgE antibodies and inhibits the binding of IgE antibodies on mast cell receptor. Meprolizumab, benralizumab and reslizumab are selective interleukin 5 inhibitor. Interleukin 5 play important role in the recruitment, activation and survival of eosinophils in eosinophilic asthma. When we will give these three drugs, they will inhibit the function of interleukin 5 and inhibit the activation survival of eosinophils. These drugs are given subcutaneously except reslizumab. Reslizumab is given IV. If we talk about mast cell stabilizers, there are two type of drugs, chromoline and nidocromil. These are mast cell stabilizers. As I explained that mast cell contain histamine granules. When they become stimulated by IgE antibodies, they become degranulated and result into secretion of histamine molecules. Chromoline and nidocromil inhibit the or stabilize the activity of mast cell, result into inhibition of mast cell and basophil. Their duration of action is very short and require 3 to 4 times per day. Mast cell stabilizers are available in nebulizing form. Side effects such as cough, irritation, unpleasant taste. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.